हो गई। हाँ हेलो। राधे राधे भैया जी, लाइक डन करने के लिए थैंक यू शिव भैया। राधे कृष्णा शिव भैया, कैसे हैं आप? और भैया जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? मम्मा हाँ मम्मा हाँ। ठीक हूँ, मैं बिजी हूँ। अच्छा भैया जी नमस्कार। नमस्ते भैया आरिश भैया, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और खाना चल रहा है पार्टी का। अच्छा अच्छा भैया जी, लाइक डन कर दिया, थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू आर्यश भैया लाइक डन करने के लिए। ऑन है, थैंक यू भैया जी, थैंक यू ऑन रहने के लिए। और बताइए भैया जी सब ठीक है? ऑन ऑन, थैंक यू भैया, थैंक यू। अच्छा खाना चल रहा है पार्टी का, भजन सुनाना है तो सुना देंगे भैया। अभी थोड़ा 2 मिनट रुकिए, अभी सुना देंगे आपको। ज़्यादा अच्छा भैया ठीक है, तो भैया अभी मैं भी बाबू को खाना खिला रही हूँ भैया, ठीक है? ओके, ऑन हो सिस्टर, ऑन हो। थैंक यू भैया जी ऑन रहने के लिए। आदिश भैया अभी इसको खाना खिला रहे हैं भैया, हो गया सब खा लिए यही। ओके फिर आऊँगा। ओके भैया जी फिर आइएगा आप, पक्का सुनाएंगे आपको। आरिश भैया ऑन है, थैंक यू भैया जी। आपका अभी तो खाना नहीं हुआ होगा। ओके बाय बाय, बाय बाय भैया, बाय बाय। ओके सिस्टर, बाय बाय। थैंक्स। ओके भैया जी, बाय बाय। लाइक डन पार्थ जी, थैंक यू लाइक डन करने के लिए। हाय, कैसे हैं पार्थ भैया आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? पार्थ भैया आप कैसे हो, प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। अच्छा अच्छा भैया आप ठीक हो? भैया मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? पार्थ भैया मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? आप हंस क्यों रहे हो भैया, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, प्लीज़ आप बताइएगा। अच्छा अच्छा भैया जी। और बताइए भैया आपका खाना पीना हो गया? ये गोल गोल घूम रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया भैया जी। थैंक यू बताने के लिए। और बताइए भैया आपका खाना पीना हुआ पार्थ भैया? अच्छा अच्छा, आप तक कमेंट देर में जाता है, अच्छा भैया।
हेलो भैया आ गए हैं, शिव भैया। बस पता नहीं क्यों भैया ऐसा हो रहा है, समझ नहीं आता मुझे तो। कभी कभी कमेंट कितना देर क्यों आता है मेरे पास। ओके ओके, अब सो जाओ, ठीक है, हो गया। पानी वानी पी के चलो सो जाओ। हेलो भैया, शिव भैया, और बताइए कौन है आप? और पार्थ भैया आपका अच्छा हो गया खाना पीना? हाँ जी, अच्छा अच्छा। थैंक यू भैया, सपोर्ट करने के लिए आप आए हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भैया। आप भी करते हैं पार्थ भैया? लाइव आपकी भी होती है? आपकी आवाज़ कितनी ख़राब है। मैं क्या करूँ, क्या करूँ भैया, ख़राब आ रही है, पता नहीं क्यों ख़राब जा रही है। भैया क्यों ख़राब आ रही है आवाज़? हाँ जी, अच्छा। शिव भैया बताइए प्लीज़, मेरी आवाज़ क्यों ख़राब लग रही है आपको? अच्छी से नहीं आ रही है क्या? 8 बजे रात, अच्छा भैया जी, अच्छा अच्छा। किरण दीदी आ गई हैं, किरण दीदी लाइक कर देना। शिव भैया बताएंगे कि आवाज़ को क्या हो गया है मेरे, कि आप कल कहीं वो वाले तो नहीं बन जा रहे हो जो जिन्होंने कमेंट आके किया था? ओके भैया, कोई बात नहीं। क्या हाल चाल है? ठीक है दीदी, सब बढ़िया है। अच्छी है आवाज़। जाने दीजिए भैया, वो ऐसे ही बोल रहे हैं। लाइक डन, थैंक यू थैंक यू। कल कोई आए थे भैया ऐसे ही, तो दूसरी आईडी वाईडी बना के आए थे, उनका कोई यूट्यूब पे चैनल नहीं था। मुझे लगा आप उनकी तरफ से बोल रहे हैं ऐसा कुछ। वो भी ऐसा ही बोल रहे थे। आप क्यों बोल रहे हो बताओ? हाँ खाना हो गया दीदी। और राधे कृष्णा राधे कृष्णा। किरण दीदी आप पार्थ भैया के लिए न्यू हैं तो प्लीज़ आप एक दूसरे को ज्वाइन कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि पार्थ भैया आपके लिए न्यू होंगे। बोलिए शिव भैया, कमेंट करिए आप। आपने वो नहीं नहीं नहीं, लगती नहीं हो आपने, मतलब मुझे लगा कि आप कमेंट पास कर रहे हो वैसा जो उन्होंने बोला था, तो मुझे लगा आपको याद है तो इसलिए आप कमेंट पास कर रहे हो। हाँ जी हाँ जी, अच्छा भैया जी, आपके लिए ज्वाइन मी। पार्थ भैया आपको ब्लू दे थे, आप एक दूसरे को ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत रिटर्न ले लीजिए, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, रिटर्न मिल जाएगा। बिल्कुल दे देंगी पार्थ भैया रिटर्न। किरण दीदी भी दे देंगे और आप भी दे देंगे एक दूसरे को। आप बोलिए तो एक दूसरे दोनों लोग को आपको ब्लू दे दें, आप ज्वाइन करके रिटर्न दे लीजिए। ऐसी बात है तो नहीं नहीं, ओके ओके।
वो भैया ना 3 आईडी बना के आए थे अपने, पता नहीं कौन थे, नाम XYZ थे और एक 7375 ऐसा करके थे और एक आईडी और थी। तो वही आए थे भैया। सक्षम मिश्रा आ गए। ओम नमः शिवाय। सरिता दीदी आ गई हैं। कैसे हो? मैं ठीक हूँ सरिता दीदी, लाइक कर दीजिए आप। सरिता दीदी आप लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कैसी हैं दीदी? आपका खाना पीना हो गया सरिता दीदी? लाइक कर दो आप सरिता दीदी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। राधे 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 राधे। लाइक करने के लिए मिल ही रहा है। थैंक यू दीदी। आपका खाना पीना हो गया सरिता दीदी? और पार्थ भैया आप भी ऑन हैं तो किरण दीदी मैं आपको ब्लू दे देती हूँ और आप पार्थ भैया को ज्वाइन कर लो, ये पक्का रिटर्न कर देंगे। वीडियो पे कमेंट छोड़ देना। हाँ बहन सब कुछ हो गया। अच्छा दीदी मेरा भी हो गया दीदी। किरण दीदी आपको ब्लू दिए हैं, प्लीज़ पार्थ भैया को आप ज्वाइन करो और उनको वो आपको वीडियो पे कमेंट छोड़ देना, वो आपके वीडियो। राधे राधे भैया जी आप ऑन रहिए। दीदी आपको ज्वाइन कर, दीदी जाइए ज्वाइन करके आइए और वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर देना किरण दीदी, तो आपको वो रिटर्न कर देंगे भैया। और सरिता दीदी और बताइए कैसी हैं आप? शिव भैया ऑन है तो प्लीज़ कमेंट करना। राधे राधे पार्थ भैया राधे राधे। किरण दीदी गई हैं आपको ज्वाइन करने। पार्थ भैया ये किरण त्रिवेदी जो हैं वो मेरी दीदी हैं, सिस्टर हैं। बहन खाली लगती हो आप, मुझे कोई काम नहीं है आप, बहुत खाली लगती हो आप, मुझे कोई काम नहीं है आपको। हाँ आप वही बन के बोल रहे जो कल कमेंट कर रहे थे। हाँ सही कह रहे हो भैया। आप भी थे उस टाइम ना भैया जी, जब वो कमेंट कर रहे थे तो आप थे। ये सब वही बोल रहे थे भैया, इसलिए आप पास रिपीट कर रहे हो। अच्छा जी। आ जाएंगे भैया जी, तो मुझे आ गया वो क्या बोलते हैं उसको, रिमूव करना, तो रिमूव कर देंगे उनको। आज लगता है आएगा भी नहीं, वो 3 आईडी से आए थे, 3 आईडी से, और जितना कमेंट किए थे सब डिलीट भी कर दिए। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हाँ भैया जी रुकिए, आपको वो गई हैं ज्वाइन करके आ रही हैं। सही पकड़े हैं, हाँ बता तो रहे हैं आप, सही पकड़े हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हो भाई किसी को लेकर? पागल नहीं दीदी, ये परेशान नहीं हुई शिव भैया। अरे पार्थ हैं। अच्छा अच्छा पार्थ भैया आप चेक कर लो, दीदी ने आपको ज्वाइन कर लिया है। रंगोली दीदी आ गई हैं। रंगोली दीदी, रंगोली दीदी अभी तो आपके मैसेज आ रहे हैं, आपने पहले ही किया था दीदी। थैंक्स जी, चेक कर लो। रंगोली दीदी लाइक कर दीजिए प्लीज़। और तो सरिता दीदी कल रिटर्न कर दूंगा। ओके ओके भैया रिटर्न कर देना, ज्वाइन कर लिया है। हाँ हाँ भैया कल कर देना। राम 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 दीदी, रंगोली दीदी राम राम। और बताइए, तो सरिता दीदी ये भैया जो बोल रहे हैं शिव भैया, कल एक आए थे, लाइक पहले ही। अच्छा अच्छा, नहीं मिला दीदी मुझे, आपका मैसेज नहीं आया दीदी, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। और सरिता दीदी मैंने आपको ब्लू दे दिया है दीदी, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा सारे हो गया दीदी, कोई प्रॉब्लम होगा फ़ोन में। रंगोली दीदी गुड नाइट बोल दो, सबको बोलोगे, सबको गुड नाइट। गुड नाइट। मैं सोने जा रहा हूँ। मैं चुन्नी गई मंगू कहाँ गई? वो है, बोलो सब लोग लाइक कर दो, ऊपर कह दो लाइक कर दो। मोगू
पापा हाँ ऊपर है ऊपर। अब ठीक है, सो जाओ तुम। गुड नाइट। गुड नाइट हो गया। पार्थ भैया ऑन है तो प्लीज़ कमेंट करना। और रंगोली दीदी, ये भी कोई तरीका है भीख मांगने का? वो कितने बोल रहा है, सोने जा रहा था मेरे। नहीं बेटा, नाइट बेटा, गुड नाइट बेटा। लाइक कर दो, वो रोज बोलता है भैया जी, ऐसा मत कहिए आप। हेलो जी सिस्टर, गांव की छोरी आ गई है लाइक डन के साथ। थैंक यू गांव की छोरी जी। हाउ आर यू? एम फाइन छोरी जी, थैंक यू। आप कैसी हैं? तरीका आप बता दो भाई। दीदी आप बुरा मत मानिए, वो ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं। शिव भैया बहुत अच्छे हैं वो। आ? नींदी आ जाएगी। मैं ठीक हूँ, आप बताओ ठीक है? दीदी गांव की छोरी जी बहन। बिल्कुल नहीं आ रही है, आ जाएगी ठीक है। सक्षम दीदी ऑन है। रंगोली दीदी प्लीज़ आप कमेंट करिए, देखिए आपका कमेंट क्यों नहीं आ रहा है। ऑन बट मोन, ओके 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 दीदी। क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या? आजा निधि, मेरे बाबू को तो एक बार सोजा सोजा वाला गाना गा दो तो जोर से। हाँ मौसी सुन रही है, मौसी सुनो मेरा बाबू गाना गा रहा है। हाँ ठीक है गाओ। तुमको गए तुमको चोया तुमको चोया। सो जा मेरे कान्हा, हम तुम्हें सुलाने आए, गैया भी तुम्हें सुलाएं। और बोल रहा है बछुआ नहीं कह पा रहा, पड़ा हुआ। तुमको चोया। क्या हो गया? नानी नानी निन्नी नहीं आ रही? आजा निन्नी। निंदी बहुत गंदी है, अभी आ जाएगी तो सोगे। गांव की छोरी जी ऑन है तो कमेंट करना। पार्थ भैया आप, किरण दीदी आप, जो भी हैं। क्या? निंदी नहीं आ रही है? क्या? क्या हुआ बोलो? मम्मे बोलो। अच्छा ऑन है, अच्छा किरण दीदी ऑन है। बोलो। नींद नहीं आ रही मम्मी? आ जाएगी आ जाएगी। पार्थ भैया ऑन है तो प्लीज़ कमेंट करना। रंगोली दीदी आपका कमेंट नहीं आ रहा है। गांव की छोरी जी आपका भी कमेंट नहीं आ रहा है। सरिता दीदी ऑन है, कमेंट कर रही हैं। थैंक यू सरिता दीदी। अब से अच्छी आवाज़ आपके बच्चे की। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बच्चे की ठीक है। क्या हो गया? तो बच्चे की आवाज़ तो अच्छी होती है ना भैया। राधे 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 राधे। बाबू हटो तो। जो भी ऑन है प्लीज़ कमेंट करना। क्या हो गया? देख लो मौसी हैं। नहीं नहीं दबाना नहीं होता बाबू, इसमें बोलना होता है। हाँ गांव की छोरी जी हैं, डांस। वो गांव की छोरी हैं तुम्हारे, वो ऐसे डांस कर रही हैं, देख लो हेडफोन लगा के डांस कर रही है ना। उसको छूना नहीं होता है बाबू। हाँ ऐसे डांस कर रही हैं। ऑन हूँ बट क्या भेज दें? डांस वाला स्टिक, अच्छा भेज रही हैं। हाँ देखो भेज दी है ना। थोड़ी अपनी भी ठीक कर लो। ओके भैया जी कर लेंगे। हाँ
14, 14. 14, 13, हाँ, no, 14, ये शिव भैया कमेंट नहीं कर रहे हैं कि उनकी मोबाइल लेके कोई और कर रहा है, मुझे लग रहा है। गांव की छोरी जी। no, बुआ भी गई, बुआ आ गई। हाँ हाँ, पूरा आ गई गांव की छोरी। मदी हाँ, मदी का तुम मुझे मत तुमका मदी को ये अभी देखो, नहीं ये देखो गांव की छोरी जी। माँ हाँ हटा दो, हटा दो, हाँ, हटा दो। हटा दें? हाँ, ठीक है, उनको हटा। कौन हो सिस्टर जी? हटाओ। ओके ओके, गांव की छोरी जी हट बहन। गई, क्या हो गया? हट गई को हट गई, अभी फिर से आ जाएगी। अभी भी आ गई मनोरंजन का हाँ हाँ, फिर से आएगी। मेरे डांस का ऐसे हाँ, ऐसे डांस करिए, देख रहे हाथ ऊपर करके ना। मामा किरण दीदी ऑन है तो प्लीज कमेंट करना, पार्थ भैया ऑन है तो कमेंट करना। रंगोली दीदी का पता नहीं क्यों कमेंट रुक जा रहा है। किरण दीदी को आ रही। मैं उनका छोटा भाई हूँ। कोई बात नहीं, जो भी हो आप। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। बाय बाय सभी को। बाय बाय सरिता दीदी, बाय बाय। अर्चना देवी, अब वो आरती आ गई है। हेलो आरती। आरती कमेंट करना, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अरे आरती तुम्हारी दीदी हैं, तुम्हारी दीदी हैं। बनका दीदी आप पीवा हाँ, बन्नू की दीदी हैं। बहन कर मिलती हूँ। ओके ओके दीदी। बाबू कैसे? बाबू देखो बोल तो रहा है, कितना बोल रहा है। बाय बाय सरिता दीदी, बाय बाय। थैंक यू दीदी इतनी देर तक सपोर्ट करने के लिए। थैंक- नींद आए जी तब तो नींद आएगी ना। आ जाओ। क्या हो गया? मैं नहीं लूंगा, आप जा रहे हो क्या? मैं नहीं लूंगा, नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही वो। मैं नहीं लूंगा, एक जीतूंगा, ठीक है, सो जाओ अच्छे से मैं जैसे। नहीं जीतूंगा, मैं एक जीतूंगा। ठीक है, जैसे मन कर रहे बाबू ऐसे सो, ठीक है। मैं लूंगा कहीं कहाँ कहाँ है? हाथ बंगाल में, बम में? अच्छा। बन में, किरण दीदी ऑन है। बम में। ठीक है, नहीं। और आरती कमेंट करो और बता, घर में मम्मी पापा ठीक हैं सब? हर्ष कैसा है? किरण दीदी आपका खाना पीना हो गया? हाँ सब ठीक है। अच्छा अच्छा। गांव की छोरी जी ऑन है आप? प्लीज़ एक बार और कमेंट करिए, पता चले आप ऑन है कि नहीं। क्या हो गया? कर तो रहे हैं ऐसे। हर्ष भी ठीक है। हाँ हो गया। हटा दें? इसको ओढ़ोगे नहीं? बिल्कुल नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके हाँ हाँ, आरती खाना हो गया मेरा। हो गई, अच्छा कोई बात नहीं। गांव हो की गई। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। अच्छा गांव की छोरी जी हैं। धन्यवाद सब, आप सबका बहुत बहुत। प्रीति मिश्रा, ठीक है दीदी। प्रीति दीदी आप आ गई हैं, थैंक यू। किसकी शादी है आरती? और प्रीति दीदी आप लाइक कर दीजिए प्लीज़। गांव की छोरी जी ऑन है। प्रीति दीदी प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। और बताइए कैसी राधिका की बुआ की शादी में? नहीं आरती बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, बुलंदशहर नहीं आ पाएंगे। अच्छा अच्छा दीदी, बगल में बारात आई है। प्रीति दीदी प्लीज़ लाइक कर दीजिए आप। और बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हेलो हाय प्रीति दीदी। नहीं ऐसे बोलते, रिपीट नहीं करते बात को बाबू। बात को नहीं, ठीक है। वो तो बको इपिका तो बको हाँ, शुभ को रिपीट करना।
और याद को नहीं, याद को नहीं। दीदी न्यू लोगों से बोलो मुझे ज्वाइन करे। ओके ओके। प्रीति दीदी से किरण दीदी आपके पास ब्लू है ना, आप प्रीति मिश्रा करके हैं, इनको ज्वाइन कर लो, ठीक है। चितमुची ये आपको रिटर्न कर देंगी, प्रीति दीदी आपको रिटर्न कर देंगी। और गांव की छोरी जी ऑन है आप, तो प्लीज आप भी प्रीति दीदी को ज्वाइन करिए। मैं टूटा। ओके, कल शादी में जाना है तो हम मेहंदी अच्छा मैं टूटा। हाँ ठीक है। बाय 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 राधिका, गुड नाइट। शादी में जाना राधिका, तो पिक मुझे आरती पिक भेजना पक्का, ठीक है। पिक मुझे ज़रूर भेजना। वो बनाओ उनकी बुआ की भेजना और आप अपनी सबकी भी भेजना, सब लोग। मम्मा ना बेबे मम्मा ना दीदी मैं रिटर्न कर दूंगी। ओके ओके, आप कर देना। माता बुना पूजा बनो ना बनो। अर्चना दे गुड नाइट बाय बाय आरती, बाय बाय। हाँ हाँ। हेलो हाय तुक तुक जी, बुलबुल जी, प्लीज और बताइए कैसे हैं आप। बाय बाय जी सिस्टर जी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय गांव की छोरी जी, बाय बाय प्रीति दीदी। और बताइए कैसी हैं आप। तुक भाई जी आप प्लीज़ अपना नाम बता देंगी तो ठीक रहेगा आपके लिए, मेरे सब अच्छा है। भाई जी आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज़। तुक तुक बुलबुल जी, भैया आप नाम बता दीजिए अपना। राहुल है, अच्छा भैया राहुल भैया लाइक कर दीजिएगा। राहुल भैया प्रीति दीदी आ गई हैं। और बताइए राहुल भैया कहाँ से हैं आप। पता ही मैंने आपको ज्वाइन किया है कि नहीं, एक मिनट चेक करते हैं भैया। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ मुझे कर लेना। देखिए नहीं किया है भैया जी मैंने आपको ज्वाइन। आप वीडियो पे एक कमेंट छोड़ दीजिएगा भैया, मैं आपको रिटर्न कर दूँगी। अभी तो मैं आपको ज्वाइन भी नहीं कर सकती, मैं तमिलनाडु से हूँ। अच्छा अच्छा भैया जी, थैंक यू भैया, आप मेरे एलबी में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रीति दीदी डांस कर रही हैं। प्रीति दीदी किरण दीदी गई हैं शायद आपको ज्वाइन करने, ठीक है, उनके पास ब्लू है तो वो आपको ज्वाइन करने गई हैं। और ये भैया जी हैं राहुल भैया। प्रीति जी डन। प्रीति दीदी आप चेक कर लीजिए, देखिए आपको दीदी ने ज्वाइन कर लिया है और आप इनको रिटर्न दे दीजिएगा। और राहुल भैया आप चेक कर लो, हाँ चेक कर लीजिए दीदी। राहुल भैया, हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं, दुनिया की हर माँ के चरणों में शीश झुकाता हूँ। वाह भैया बहुत अच्छा कमेंट आपने किया है। मैं ठीक हूँ दीदी। अच्छा अच्छा प्रीति दीदी, ओके ओके दीदी आप कर देना, लेकिन पक्का कर देना, ये किरण दीदी मेरी बहन है, ठीक है, आप कर देना। आप कल फिर से एलबी में आइएगा तब कर देना। जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते हैं। सही बात आपने कहा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। आयुष नैन्सी दीदी आ गई हैं। नैन्सी ठीक है दीदी, कैसी हो, लाइक डन, थैंक यू दीदी। आयुष भैया ज्वाइन कर लीजिए। आयुष भैया नहीं दीदी है नैन्सी दीदी, रिटर्न मिल जाएगा और आपको रिटर्न मिल जाएगा। बताइएगा नैन्सी दीदी आपको ब्लू चाहिए तो प्लीज़ आप बताइएगा। उसके सपनों का महल गिराकर कंकर कंकर बीन लिए, खुदगर्जी के उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बगल में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ा। ऐसा ही कह रहे हैं भैया। हाँ दीदी आपको ब्लू दे देते हैं, हम दे दिए दीदी, चेक कर लीजिए। और हम भूल गए हर गलती
पर उसे डांटा समझाया था, बच जाऊं बुरी नज़र से, काली टीका सदा लगाया था। बहुत बहुत कमेंट करे भैया आपका, ये मेरी एलबी में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है बहन, मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ सिस्टर। अच्छा अच्छा, और प्रीति दीदी आपको नैन्सी दीदी ज्वाइन करने गई हैं, तो प्लीज़ आप जाके चेक कर लीजिए। हम भूल गए, उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी मेरी नींदों की। भैया मैं सॉरी सॉरी सॉरी, शो करना है, शो करना था, हाइट का दब गया, क्या बताऊँ। हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी, हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीली में सो जाती थी। दीदी मैं खोज खोज के रिटर्न करती हूँ, एक दूसरे के सपोर्ट से ही तो इंसान आगे बढ़ेगा। हाँ दीदी जी बिल्कुल। शादी की पति से बाप बना बने रिश्तों से झूल गया, अब करवा चौथ माता पिता की ममता को भूल गया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में इसका बस एक सहारा कहती थी। बहुत सुंदर लाइन, बहुत सुंदर सच में भैया लिख रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका कि आप मेरे एलबी में आए और इतनी अच्छी अच्छी लाइनें लिख रहे हैं कि सबको अच्छा लगा है। बहन प्रीति दीदी गेम ओवर मत करिए अभी आप, अभी आपको गई हैं वो नैन्सी दीदी ज्वाइन करने। जब तक जिंदा हूँ मैं माँ का आंचल सूना ना होने दूंगा, दिन रात काम कर लूँगा पर अपनी माँ को भूखा नहीं सोने दूंगा। राहुल द्विवेदी, धन्यवाद धन्यवाद भैया जी। आप भी द्विवेदी हैं भैया? अच्छा आपने बताया तमिलनाडु से हैं। प्रीति दीदी प्लीज़ गेम ओवर ना करिए, आप कमेंट करिए कमेंट। हमें किसी से कहा कि हमारी औकात नहीं, हमने भी कह दिया मेरी, हमसे किसी ने कहा कि हमारी औकात नहीं, हमने भी कह दिया मेरी किस्मत, उस बहन से पूछो जाकर जो मेरी कलाई पर राख की बाती है। बहुत सही भैया आपने कहा। सारे तीरथ के पुण्य जहाँ मैं उन चरणों में लेटा हूँ, जिनके कोई संतान नहीं है, मैं उन माँओं का बेटा हूँ। बहुत धन्यवाद धन्यवाद भैया जी। सीख कर हर जिद पूरी करवाता है इकलौता बेटा, मगर बिटिया गुजर कर लेती दीदी टूटी पायल जोड़कर। सीख कर हर जिद की पूरी, मैं कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, बस वही ईंट वापस से तो ढूंढने में कौन टाइम खराब करे। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। हो गया, आ गई निधि? नहीं। अभी नहीं आ रही, आ जाएगी। जो भी ऑन है प्लीज़ कमेंट करना। किरण दीदी आप भी कमेंट करना, और भैया तो कमेंट कर ही रहे हैं। नैन्सी दीदी ज्वाइन करने गई हैं। प्रीति दीदी आप भी प्लीज़ गेम ओवर ना करिए, आप कमेंट करिए प्रीति दीदी, ठीक है? अभी तो गेम शुरू हुआ है मेरा। भैया आपने सुना होगा, जौनपुर ज़िला आपने सुना होगा भैया, यूपी जौनपुर ज़िला से हूँ भैया मैं। प्लीज़ जो भी है अच्छा है बहन जी। थैंक यू भैया जी, थैंक यू। और आपने बहुत बहुत अच्छी लाइन लिखी है भैया। न्यू फ्रेंड प्लीज़ ज्वाइन के, रिटर्न मिल जाएगा, ज्वाइन करें रिटर्न मिल जाएगा। दीदी आपको भी ब्लू दे दे, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, ये राहुल भैया को ज्वाइन कर लीजिए।
देखिए दीदी, सब एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तभी सबका विकास होगा, सबका साथ सभी विकास। मेरा काम ही है लिखना। थैंक यू भैया, सच में आप बहुत अच्छी लाइनें लिखते हैं भैया, आपकी सारी लाइनें बहुत प्यारी थी। अब भैया बस मेरे एक वीडियो पे कमेंट छोड़ देना भैया प्लीज़, मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। आप भी लाइव करते हो भैया जी, राहुल भैया? अच्छा अच्छा, मैं दैनिक जागरण में हूँ बहन जी। अच्छा भैया, तो बहुत बड़ी बात है भैया। सच बोलने वाले से नफरत करते हैं लोग, मतलब के लिए ही करवा जाते हैं लोग, दूसरों को सुख चैन हर दूर खड़े तमाशा देखते रहते हैं ये लोग। सही कह रहे हो आप भैया। करीब आ जाते हैं। दिल में बुरा सोचकर मीठी बातें करना हमें नहीं आता, दिखावे की इस दुनिया में कदम से कदम मिलाना चलना हमें आता। जिसे चाहे, जिसे चाह से दिलों से जान से नकली रिश्ते रिश्ते निभाना हमें नहीं आता। लोग भी बड़े मतलबी होते हैं, जब उन्हें ज़रूरतें तो पास आते हैं, वरना ज़रूरतें ख़त्म होने पर आपको छोड़ जाते हैं। ये भी आपकी बात बहुत सही है भैया, लोग भी बड़े मतलबी होते हैं, जब हो ज़रूरतें तो पास आते हैं, वरना ज़रूरतें ख़त्म होने पर आपको छोड़ जाते हैं। जिनके अंदर होती है अहम की अकड़, उनकी आंखों पर पर्दा जाता है, पर फिर मतलब के हो जाते हैं, वे साथी छूटती जाती है अपनों से अकड़। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, न न कली जब हुए रिश्ते में तो बदल गई अपना गुनाह दूसरों के लिए, पर डाल कुछ लोग सोचते हैं असलियत बदल गई। आंसू जानते हैं कौन अपना है, तभी अपनों के आने पर निकलते हैं। मुस्कान का क्या, पराया से भी अपना कर लेती है। और ये भैया की लाइन शो कर दें। बड़ी इज्जत देता हूँ यार गद्दारों को, कि बहुत कुछ जाना है धोखे खाकर। बहुत अच्छी लाइनें लिखते हैं भैया जी। मुखौटे बालपन में देखे थे, मेले में टंगे हुए, समझ बड़ी तो देखा इंसानों में है चढ़े हुए। प्लीज़ जो भी ऑन है कमेंट करना। किरण दीदी आप भी करना, प्रीति बहन आप भी, क्योंकि आपको नैन्सी दीदी अभी ज्वाइन करने गई हैं, आती होंगी, आज करके आ रही हैं। बुरे हालतों में कुछ सिखाया है, जब जान पाया कि कौन अपना कौन पराया है, जब साथ छोड़ गए वो मतलबी दोस्त, तब आंखों से विश्वास का पर्दा उठ पाया है। लोगों ने बदलने में मौसम वक्त। रुकिए भैया, मैं स्क्रीन शॉट ले लेती हूँ ये सब पोयम का, ये सब लाइनें, सॉरी लाइनों कविताओं का। और बहुत अच्छी कविता है, पढ़ेंगे। दिया है, कुछ लोगों को लगता है हमें उनकी चालाकियाँ समझ में नहीं आती, लेकिन हम चुपचाप उनको अपनी नज़रों से गिरता देख रहे होते हैं। जिन मैंने आज तक आंख बंद कर भरोसा किया, अक्सर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि मेरी आंखें खोल दी। जिंदगी में लाने से पहले एक बार परख लेना लोगों को। आजकल शेर की खाल में भेड़िए बहुत मिलते हैं, किसी के सामने दिल न खोलने से पहले उसकी नब्ज चेक कर लेना। आजकल दोस्ती की आड़ में दुश्मनी ज़्यादा निभाई जाती है। बिल्कुल सही भैया आप। बुरा भले लगे पर मैं सच कहता हूँ, अब मतलबी दोस्तों से दूर रहता हूँ। धोखेबाज से तो दुश्मन अच्छे, कम से कम अपना होने का दिखावा तो नहीं करते। भीड़ में दोस्तों की पहचान नहीं होती, पहचान तो तब होती है जब आप जीवन में खुद को अकेला पाते हैं। नकली लोगों का असली मुखौटा तब उतरता है जब आप उनके काम सॉरी सॉरी जब आप उनके किसी काम में नहीं आते। ब्लू ले लो सिस्टर। ओके दीदी, ओके ले लेते हैं आपसे ब्लू, ले लिए दी। भले ही कितना भले ही कितना ही कीमती लिबास पहन लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, घटिया किरदार कभी छुपता नहीं। ये दुनिया झूठी नहीं जनाब, ये दुनिया वाले झूठे हैं। प्लीज़ जो भी ऑन है कमेंट करना। प्रीति दीदी आप ऑन है तो प्लीज़ कमेंट करना। नैन्सी दीदी ऑन है तो प्लीज़ आप भी
और राहुल भैया, आपने अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर सोना भी है तो आँख खुली रखना, नहीं तो तुम्हारे अपने तुम्हें मरा हुआ घोषित कर देंगे। वो जो तुम्हारी चिंता है उन्हें ऐसा दिखा करते हैं। प्रीति दीदी प्लीज़ चेक कर लीजिए और रिटर्न कर दीजिए। प्रीति दीदी ऑन है तो प्लीज़ चेक कर लो। प्रीति दीदी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पास, अगर आप ऑन है तो चेक करिए और रिटर्न भी कर दीजिए। प्रीति दीदी ऑन है तो प्लीज़। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो अतीत में निवास न करें, भविष्य के बारे में चिंता न करें, वर्तमान में पूरी तरह से जीने पर ध्यान दें। सही कह रहे भैया आप। राहुल भैया, आप सच में बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखते हैं। आज की दुनिया में नेक लोग कम और फेस लोग ज़्यादा। सही कह रहे हो आप। तुक तुक भैया जी, मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ। राहुल भैया इनका नाम है। राहुल भैया जी, आपको नैन्सी दीदी ज्वाइन करने जा रही हैं, तो प्लीज़ आप रिटर्न कर देना। कर देंगे कर देंगे। अगर अभी रिटर्न चाहिए तो बोलो, मैं भैया को भी ब्लू दे देती हूँ, तो वो आपको रिटर्न कर देंगे। कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, इंसान हमेशा खुद उनका कत्ल करता है, कभी धोखा देकर, कभी नज़रअंदाज करके और कभी गलतफहमी से। रवैया एक पसंद है, खुशी एक चयन है, आशावाद एक विकल्प है, दयालुता एक विकल्प है, दोनों एक विकल्प हैं, देना एक विकल्प है, सम्मान एक विकल्प है। आज जो भी चुनाव करते हैं वो आपको मिलता है, सोच के चुने। आप सिर्फ अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, आधी से ज़्यादा दुनिया होती रहती है, तब भी सूरज निकलता है। बिल्कुल भैया, आपकी ये लाइन तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। काम करना चाहिए, दूसरे की तो फिर बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना चाहिए। कोई क्या कह रहा है क्या कह रहा है, आपको इग्नोर ही करना चाहिए। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। अंत हमेशा अच्छी सोच, अच्छे विचार के साथ सकारात्मक रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने पर बोलने वालों को शहद भी छुप गया थोड़ा सा इसके आगे बिकता है, और मीठा बोलने वाले को मिर्ची भी बिक जाती है। थोड़ा सा मिट गया, नहीं देख पा रहे हैं, ऊपर कमेंट जाएगा तो पढ़ पाएंगे। शहद भी नहीं बिकता। जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटियों को खाती हैं, और जब खाली हो जाता है तो चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। अर्थात मौका सभी को मिलता है। मछलियाँ चींटियों को खाती हैं, फिर खाली होने पर चींटियाँ मछलियों को। धीरे से ही सही, लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय बाद ठहरा हुआ भी सड़ने लगता है। राइट भैया जी, बहुत 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 धन्यवाद भैया जी आपका कि आप मेरे लाइव में आए। और आप बताइए, आप दैनिक जागरण से भी हैं। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका मैंने आपको किसी की भी एलबी में तो देखा था, याद नहीं आ रहा भैया किसी की एलबी में आप गए थे। आप ये पोएम मतलब अपनी लाइन लिख रहे थे, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा भैया जी। एक बार मैंने आपको किसी की एलबी में देखा है कमेंट करते हुए आपको। बस 1 मिनट भैया जी, लाइट ऑफ कर दें तब। मैंने भी देखा है, हाँ भैया आपने
अच्छा अच्छा, आप मुझे बहुत जगह देख आप मुझे बहुत जगह दिखती हैं। अच्छा, देखा है, जगह देखा है। हाँ भैया, मैंने ना आपको सच में किसी के लाइव में तो देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किसके लाइव में देखा है। और आज अपने लाइव में देख तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सच बताएं तो आपसे पूछा भी था चैनल का नाम सास बहू है। अच्छा अच्छा भैया, आपने पूछा भी था, ध्यान नहीं आ रहा भैया जी, सॉरी। और सच में भैया जी मैंने आपको वहीं देखा है। और भैया जी देखिए, आपको नैन्सी दीदी ने ज्वाइन कर लिया है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। हाँ भैया, सास बहू है, क्योंकि मेरी सासू माँ भी मेरे साथ गाती हैं भैया, वीडियो बनाती हैं। इधर बीच नहीं बना रहे हैं, थोड़ा घर का काम चल रहा है, पेंटिंग वेंटिंग, तो उसी में वो बिजी हो जा रही हैं। मेरी लाइव सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे, प्लीज़ सपोर्ट करना। मैं कभी भी जाता हूँ मैं कभी भी जाता हूँ तो ऐसे ही कमेंट करता हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो ऐसे ही कमेंट करता हूँ, सॉरी, कहीं भी। हाँ भैया, हाँ वही बता रहे ना कि मुझे मतलब देखा था मैंने आपको किसी के कम लाइव में, क्योंकि अभी ताकि लोगों का इंसानियत जागे। भैया, होता नहीं है कि आप अगर कोई, अभी आप मेरे कमेंट में देखिए, एकदम ऊपर HDS करके कमेंट से, वो भैया बहुत अच्छे थे, शिव भैया रोज़ कमेंट करते थे। आज पता नहीं उनकी मोबाइल किसके हाथ लग गई है, और इतना मतलब कमेंट कर रहे हैं कि आपको क्या बताएं। हाइड कर दिए उनको, क्या करें। ज़्यादा मतलब गंदा कमेंट नहीं कर रहे हैं, बस फालतू का कमेंट कर रहे हैं, जो कि कुछ मतलब नहीं है उसका। नैन्सी दीदी हेलो हेलो, सुपर सुपर। नहीं बहन जी, मैं ऐसा वैसा नहीं 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 भैया, मैंने आपको नहीं बोला। मैंने जो आपने ये लाइन बोली कि मतलब कि आप अपना काम करिए और फिर जो है तो मतलब क्या करके लाइन थी भैया, याद नहीं आ रहा है। प्रसन्न होके करिए मेरे लिए, नारी पूजनीय है। अच्छा भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। कि कमेंट मतलब आपका कमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आपने इतना प्यारा प्यारा कमेंट किया। नारी की पूजा करता हूँ, धन्यवाद भैया जी। नारी पूजती रमते ऐसे करके है ना, जहाँ नारी की पूजा होती है तो वहाँ देवता भी निवास करते हैं। ऐसा है भैया जी। तो पता नहीं भैया जी लोग कब समझेंगे। और आपसे मिलके तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है राहुल भैया, सच बता रहे हैं आपसे। थैंक यू भैया जी। नारी का सम्मान भैया, सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे अब आपको मतलब कोई भी हो या कुछ भी, सबका सम्मान कर, लेकिन भैया नहीं हो रहा है। इतनी सजाएं सबको मिल रही हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे सजा होगी क्या होगी, यहाँ आज तक मैंने भाभी नहीं बोला किसी। ये गलत किया आपने, आप वल्ली बहन जी बोलता भैया, ये क्या बात होती है, भाभी नहीं बोला, वल्ली बहन जी बोलता हूँ। नहीं भैया जी, जय श्री कृष्ण मेरी प्यारी प्यारी बहना। थैंक यू सरिता दीदी, आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी ये गलत बात है, अपनी भाभी को तो प्लीज़ भाभी बोलना आप, उनको भी बहन जी मत बोलना, वरना आपको छोड़ेंगी नहीं वो, ठीक है। तो सरिता दीदी आ गई हैं, लाइक कर दीजिए सरिता दीदी। जो नहीं बोला तो नहीं बोला। अच्छा अच्छा भैया, अपनी भाभी को भी भाभी नहीं बोलते हो भैया आप, बेचारी क्या कहेगी, एक तो मुझे कोई भाभी नहीं बोल रहा। अच्छा भाभी नहीं है मेरी, अच्छा भैया, अच्छा अच्छा। और सरिता दीदी खाना वाना खा लिया आपने? राहुल भैया आपका भी खाना पीना हो गया?
देखिए भैया, मुझे तो मतलब ठीक है, सब सही, हर जगह सबका सम्मान ठीक है। आज तक मैं कभी भी जाता हूँ देवर बहुत मिलते हैं। आज तक मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी एलबी पर चले जाओ। अच्छा अच्छा, देवर बहुत मिलते हैं। भैया नहीं, अभी तक मेरे भी एलबी में ऐसा कोई नहीं आया है जो भाभी बोले वहाँ देवर बहुत मिलते हैं। अच्छा 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 भैया जी, तो मेरे कमेंट में जो अगर एक देवर आते होंगे भैया, तो वो मेरे सच में देवर हैं, बगल में हैं, बगल के हैं। और तो ऐसा कोई नहीं आता भैया जी मेरे एलबी में। और लेकिन हाँ, आप सब नारी का सम्मान करते हैं वो अलग बात है। ठीक है, जब आपकी भाभी नहीं तो आप किसको कहेंगे भाभी। हाँ बहना, खाना हो गया मेरा। अच्छा अच्छा दीदी, आपका, राहुल भैया आपका खाना हो गया। और नैन्सी दीदी ऑन है तो प्लीज़ कमेंट करना। आप प्लीज़ जाइएगा तो बता के जाइएगा, ब्लू लेंगे आपसे। अच्छा है भैया, बहन जी बहुत अच्छा है, बोलिए। अच्छा लगता है, बहन जी भी अच्छा लगता है। भाई मैं क्यों किसी से पूछूंगी, आप क्या झूठ बोल रहे हो क्या। राहुल को जानती हूँ क्या। अच्छा राहुल भाई, आप झूठ थोड़ी बोलेंगे कि मैं क्यों किसी से जाके पूछूं। ब्लू ले लो दीदी। ओके नैन्सी दीदी, ब्लू ले लेते हैं आपसे। सरिता दीदी, बाबू सो गया है। मेरी बहुत बहन है यूट्यूब पर। अच्छा हाँ भैया जी, उनमें से एक मैं भी हूँ। सरिता दीदी, अब बाबू सो गया है, प्लीज़ आप थोड़ा लेट हो गई, कुछ टाइम पहले जग रहा था। अच्छा अच्छा अंशु त्रिपाठी के चैनल पर मिली भैया, आपको याद है। अंशु त्रिपाठी, मुझे याद नहीं आ रहा भैया किसकी आज बाबू को कैसे सुला दी मेरी प्यारी बहना, हमसे बात भी नहीं किया। दीदी वो सो गया, अपने से ही सो गया। और बोल भी तो रहा था दीदी, जब से मतलब लाइव ऑन था तो बोल भी रहा था, सबको गुड नाइट बोला और उसके बाद सो गया। दिन में नहीं सोया था दीदी आज। अच्छा भैया, आपको याद है मैं आपको किसके लाइव में मिली थी, अंशु त्रिपाठी के चैनल। ओके ओके भैया जी, थैंक यू भैया, बहुत सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी वो सो गया, क्या करें बताओ, आप सो गया तो अपने से अपने से ही सो गया। आज आज बोला भी नहीं मम्मा लोरी गाओ, अपने से ही सो जा मेरे कान्हा बोल के सो गया। शैतानी करता दीदी बहुत, अगर आप थोड़ा मारने जाओ ना, अभी बोलोगे अभी तुमको पीटते हैं तो बात सुन, मेरी बात सुन मम्मा, पहले मेरी बात सुन, फिर आप बोलोगे अच्छा बोल। मैं कुछ किया नहीं मम्मा, अपने हो जाता है, अपने से हो जाता है इनको। भाई जी राधे राधे। राहुल भैया आपको सरिता दीदी राधे राधे कह रही हैं, और आपने अभी तक मुझे नहीं बताया राहुल भैया कि आपका खाना हुआ कि नहीं। दिल से की डांट पड़ेगी। अच्छा थी, हाँ दी सच कह रहे हैं कि डांट पड़े। आपके जितने फ्रेंड हैं काफ़ी लोग जानते हैं बहन जी। अच्छा भैया जी, आपको आप अभी ऑफिस में हो बहन जी। अच्छा भैया जी, सास बहू करके एक न्यूज़ में छाप दीजिएगा।
मेरी भी सास बहू की जोड़ी कैसी है ना भैया जी। सुबह मेरी सासू माँ देखेंगे आई ये हम लोग क्या कर दिए। एक नारी का दुख। पढ़ना आप। अच्छा भैया जी किस में पढ़ना है भैया आप। एक नारी का दुख पढ़ना आप। अच्छा भैया आपको ज्वाइन करेंगे ना फिर देखेंगे भैया जी। श्री राम प्रिया जनक नंदिनी की त्याग का गान बखान करूं कर जोड़ शीस नवा चरणन बारंबार प्रणाम करूं। सिया परित्याग की व्यथा सुन करुणा मैं मन में भर जाय आया। कैसे सिया सिया को राम राम को संभाले जब ये क्षण आया। कैसे आखिर कहाँ सिया ने नाथ मैं वन को जाती हूँ पति का धर्म बचाने को मैं पत्नी धर्म निभाती हूँ। अच्छा भैया जी ऐ विधिना क्या तुझे भी तरस नहीं आई। आखिर क्यों ऐसी मजबूरी दी क्या 14 वर्ष वनवास कम था जो जीवन भर की दूरी दी। क्यों विरोध नहीं किया किसी ने क्यों धरा नहीं दो टूक हुई। क्यों जगत जननी को वन में भेज दिया परिस्थितियों में कैसी चूक हुई। जो लक्ष्मी नारायण अवतारित हैं जग जिनका स्तुति वंदन करता है। महाकाल भी जिनको नमन करे काल उन्हें अपना खेल दिखाता है। जिस प्रजा को पुत्र स्नेह दिया कलंकित किया वही सोच शर्मिंदा थी। अरे कहने को तो वो जीवित थी पर कहाँ सिया पर फिर जिंदा थी। बिल्कुल सही भैया आप। बुरा समय जब आन पड़े तो दास भी आंख दिखाते हैं। मीठे वक्तों मीठे वक्ता मधुभाषी भी कड़वे बोल सुनाते हैं। नंगे पैर अवस्था गर्भित सिया कैसे कर्तव्य निभा रही। कैसी सती पतिव्रता है वो जो उदासी भी ना दिखा रही। बहुत सही भैया बहुत अच्छी बहुत प्यारी लाइन है भैया जी आपकी। राह में अटके दर दर भटके संकट ये कैसा आन पड़ा। जैसे सत्य का कोई अस्तित्व नहीं मूर्छित सकल जहान पड़ा। ऐ समय तूने क्या खेल है खेला क्यों अलग किया राम से राम परछाई को क्यों ठोकर खाते फिरे सिया क्यों दिया सजा सच्चाई को। और भैया ऑन है थैंक यू भैया ऑन रहने के लिए। कैसे अबला को अकेला छोड़ दिया जिनका ना कोई सहारा हो पर उसको हाय कौन बचाए जिसे किस्मत ने मारा हो। ऑन है भैया जी थैंक यू भैया जी। जग की किस्मत में जो बना जाती हाय उसकी किस्मत कौन बनाएगा। जो जग को पार कराती है वो डूबे तो कौन बचाएगा। कैसे आरोप थोपू श्री राम पे भी वो भी तो सोए होंगे सिया से जब वो दूर हुए विरह में कहाँ सोए होंगे। नींद कैसे आती उनको कहाँ चैन की सांस लिए। एक वनवास तो वन में काटा था दूजा महल में ही वनवास लिए। देखो हाल उस राजा की कैसे राज धर्म निभाता है प्रजा और राज्य के खातिर सर्वत्र ही अपना लुटाता है। किसकी बुरी दृष्टि पड़ी जो जन्म जन्मांतर का बंधन टूट गया। अरे प्राण तो प्राण प्रिया ले गई शरीर यही क्यों छूट गया। रो ना सके मन धो ना सके कैसे समय ये आया है जो एक दूजे के पूरक हैं आज उन्हें ही विरह सताया है। सिया अखियन धारा फूट उठी समंदर भी सीमा लांग गया वर्षों का स्थिर प्रेम आज दर्द रूप ले जाग गया। जय हे रघुनंदन हे प्राण प्रिय हे भक्त वत्सल भगवान सुनो। हे जगनायक हे पुरुषोत्तम श्री राम सुनो। जय श्री राम भाई कैसे हो आप। बहुत 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 प्यारी लाइन थी भैया। मतलब आप जो भी लिख रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा है। हार गई मैं इस दुनिया से अब कश्ती लगी किनारा है इस शरीर में इस धरती पर ये अंतिम मिलन हमारा है। प्रणाम है नाथ अनुरोध भी है दोबारा ना ऐसा होने देना। अपनी प्राण प्रिया को स्वामी विरह में ना रोने देना। वाह क्या लाइन।
प्रणाम है नाथ, अनुरोध भी है दोबारा ना ऐसे होने देना। अपने प्राण पिया को स्वामी विरह में ना रोने देना। धर्म में अपने स्थिर हो, कब तक कर्तव्य निभाएगी। श्री राम से जो दूरी हो सिया कहाँ सह पाएगी। हे नाथ चूक क्षमा करो, मुझे ये रीत समझ नहीं आती। आशीष दे नाथ विदा करो, अब भूमि भूम समाती। हे मात धरा ले चलो, मुझे जाने की घड़ी अब आई है। धरती फटी ब्रह्मांड डोला, सिया धरा समाई है। बावरे हो रघुनाथ चीख उठे, सबने सुधबुध खोया है। मायापति ही माया में पड़ विखल विखल कर रोया है। हे परम सती उत्तम चरित सिया सती, मैं तुम्हें प्रणाम करूं। जितने भी जन्म हमारे हो, हर जन्म तुम्हारे नाम करूं। धन्य भाग हमारे नाथ, जो गुणगान प्रभु का नाम हुआ। शरीर स्वस्थ, क्या इसके आगे दिल से दिख नहीं रहा है। सिया हुए प्राण मेरा श्री राम हुआ। थोड़ा इसके आगे स्वयं, शरीर स्वयं ही सिया हुई प्राण मेरा श्री राम हुआ। राहुल द्विवेदी, राहुल द्विवेदी, राहुल द्विवेदी, राहुल द्विवेदी। बहुत 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 धन्यवाद राहुल भैया आपका कि आप मेरे एलबी में आए और इतनी अच्छी अच्छी लाइनें आप लिख रहे हैं कि हम आपको क्या बताएं। मतलब सुपर से भी ऊपर, आपको क्या बोले, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था भैया जी। और कितनी भी तारीफ करें कमी है, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारी लाइन थी भैया जी आपकी ये सब। अक्ल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारी। सभी आदमी खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी। सभी नारियां कहाँ रह गई, था ये अचरज भारी। पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी सारी। अच्छा, मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, एक एक पर भारी। बैठी थी कुछ इंतजार में। भाई मैं भी आपको एक बताती हूँ, आप भी वो लिखना, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा है वो। कलयुग प्रार्थना था भाई, हम अपने स्कूल में कहते थे। बहुत ईश्वर को लेके थे, पैसे के बारे में भैया जी। मतलब कलयुग प्रार्थना है, आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा है। जब पहुंची सब नारी, बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, नहीं अगले अब बाकी। रोने लगी सभी महिलाएं, नींद खुली ब्रह्मा की। पूछा कैसा शोर है ब्रह्मा लोक के द्वारे। पता चला कि स्टॉक अक्ल का पुरुष ले गए सारे। ब्रह्मा जी ने कहा देवियों बहुत देर कर दी है, जितनी भी थी अक्ल सभी वो पुरुषों में भर दी है। लगी चीखने में रही, कैसा न्याय तुम्हारा, कुछ भी करो चाहिए हमको आधा भाग। हमारा पुरुषों में शारीरिक बल है, हम ठहरिए बुलाएं। अक्ल हमारे लिए जरूरी है और निज रक्षा कर पाए। बहुत सोच समझ कर दाढ़ी सलाहकार, तब बोले ब्रह्मा जी इस वरदान तुम्हें देता हूँ, हो जाओ अब राजी। थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुष पर भारी, कितना भी वह अक्लमंद हो अक्ल जाएगी मारी। एक बोली क्या नहीं जानती स्त्री कैसी होती है। हंसने से ज्यादा महिलाएं बिना बात रोती हैं। ब्रह्मा बोले यही कार्य तब रोना भी कर देना, औरत का रोना भी नर की बुद्धि को हर लेती है। ऐसा नहीं है भैया जी, वक्त इस बोली हमको ना, एक बोली हमको ना रोना ना हंसना आता है, झगड़े में है सिद्ध हम झगड़ा भी भाता है। ब्रह्मा बोले चलो मान ली यह भी बात तुम्हारी, जब घर में भी झगड़ा होगा होगी विजय तुम्हारी। जग में अपनी पत्नी से भी कोई पति लड़ेगा, पछताएगा सिर ठोकेगा, आखिर वही झुकेगा। ब्रह्मा बोले सुनो ध्यान से अंतिम वचन हमारा, 3 शस्त्र अब तुम्हें दे दिए, पूरा न्याय हमारा। इन अचूक शस्त्रों में भी जो मानो नहीं फंसेगा, अगर अधर्मी सिर्फ समझने में समझ जाते हैं तो बांसुरी बजाने वाला महाभारत नहीं होने देता। भैया तो मैंने भी एक कलयुग प्रार्थना किया था भैया, बहुत मतलब कैसे 8वीं में पढ़ते थे तब का ये कलयुग प्रार्थना था, तब मुझे इनाम भी मिले थे और बहुत अच्छा था। आपको कैसे बताएं भैया जी, नहीं तो आपको बता दे तो आप भी सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बाकी आपके ऊपर है। सरिता दीदी और बताइए दीदी। राहुल भैया सच में बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिख रहे थे। चलो अच्छा है बहन जी,
हाँ भैया जी सच बता रहे हैं, बच में बहुत थैंक यू भैया जी, बहुत अच्छे अच्छे आपने लिखे हैं, लाइन आपकी बहुत अच्छी है ये। सरिता दीदी ऑन है तो प्लीज़ कमेंट करना आप। भारती बीवी 1 घंटे तक पति को लेक्चर देने के बाद बोलती है, मैंने तो अब इनको बोलना ही छोड़ दिया है। आज सुबह 5 बजे मेरी नींद खुल गई, सोचा कि 3 घंटे और सो सकता हूँ, बस इसी खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। अच्छा जी, मतलब बोलना छोड़ दिया तो नींद नहीं आई। ओके भैया जी, बाय 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 भैया जी, बाय बाय राहुल भैया जी, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद आपका इतनी देर तक सपोर्ट करने के लिए आप। बाय बाय भैया भी, आप करना है, ठीक है ठीक है, तुक तुक बोल बोल भैया जी, ठीक है भैया जी। आज हम आपको ज्वाइन करेंगे भैया जी, सर्च करके ही करेंगे आप, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आपको पक्का सर्च करेंगे, कमेंट भी करेंगे। सरिता दीदी ऑन है तो प्लीज़ कमेंट करना आप, प्लीज़ दीदी। अब भैया जी गए हैं, अब आपसे बात करते हैं दीदी। बाय बाय भैया, गुड नाइट। सरिता दीदी ऑन है तो प्लीज़ कमेंट करो आप। लगता है चली गई क्या। दिल विच तेरे लिए टैग करके करदा मैं प्रॉमिस मैनू। प्लीज़ जो भी ऑन है कमेंट कर। सरिता दीदी ऑन है आप। निक्की तिवारी, हेलो भाभी कैसे हैं। निक्की कौन है। निखिल, निखिल तिवारी, भाभी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए निखिल भैया। निखिल भैया आप लाइक कर देना प्लीज़, अगर लाइक नहीं किए हैं आप तो। और बताइए कैसे हैं भैया जी, मैं अभी आपको पहचाने नहीं हूँ। निखिल भैया लाइक कर दो प्लीज़। मैं जानता हूँ। अच्छा भैया जी आप कहाँ से हैं, प्लीज़ भैया बताइए, अपना परिचय दीजिए निखिल भैया। अच्छा अच्छा, आवाज़ नेटवर्क दिक्कत है, हाँ दीदी, कोई बात नहीं दीदी। निखिल भैया प्लीज़ आप अपना परिचय दीजिए। नारीपुर जानते हैं क्या आप। हाँ हाँ भैया नारीपुर जानते हैं। नारीपुर, मेरी भाभी का घर है नारीपुर में, आपके भाभी का घर है। तो मैं कैसे आपकी भाभी हुई, ये बताओ आप।
निखिल भैया, आपकी भाभी का घर है तो मैं आपकी भाभी कैसी हुई? कोई बात नहीं सिस्टर। अच्छा हाँ सरिता दीदी, दीदी उनकी लाइनें पढ़नी थी ना दीदी, वो जो लिख रहे थे बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिख रहे थे भैया, वो दैनिक, हाँ बहनी हम अनबाटी हो तो वो दीदी वो दैनिक जागरण से थे भैया जी, राहुल भैया काफ़ी सपोर्टिंग भैया हैं वो, अच्छे भैया हैं दीदी वो। पता नहीं था बोल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, पता नहीं था बोल दिया। नारीपुर में मेरी बुआ हैं भैया, लेकिन हम आप तिवारी, आप याद नहीं आ रहा, नहीं पहचान पा रहे आपको। कोई बात नहीं भैया, और आप मेरे लाइव में आए, आपको बहुत 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 धन्यवाद। लाइक कर दो प्लीज़, निखिल भैया आप लाइक कर दीजिए। विधु दी जानती हैं? अच्छा अच्छा भैया ठीक, हाँ अच्छा वो जानती होंगी बिट्टी, ठीक है पूछेंगे हम। आप लाइक करो यार निखिल भैया, प्लीज़ लाइक कर दो। लाइक से कुछ होता नहीं, बट होता नहीं कि सब अच्छा खुशी होती है, अब देख के खुशी होती है। 6 लोगों की वाचिंग है, प्लीज़ जो भी ऑन है कमेंट करें। किया है मैंने, अच्छा भैया किया है आपने तो दिख नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में हो सकता है सब करे, अभी तो नहीं दिख रहा है। मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है भैया जी? अभी आपकी लाइक मिली है अभी। हाँ बहनी, हाँ अच्छा अच्छा, थैंक यू भैया जी। प्लीज़ घर में सबको वीडियो देखने के लिए बोलिए आप, लॉन्ग वीडियो, और जिसको भी आप अच्छा समझे उससे भी ज्वाइन कराइए। हाँ भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा सिस्टर। हाँ दीदी, हाँ दीदी वो सच में बहुत अच्छे भैया हैं राहुल भैया। टुक टुक बुलबुल करके नाम है दीदी उनके चैनल का, तो प्लीज़ आप देखिए उनको। निखिल भैया आपका खाना पीना हो गया? अच्छा अच्छा भैया जी। मुझे बरसवा आपका, हाँ भैया मेरा तो हो गया, कब से हो गया, सारा काम भी हो गया भैया जी, सब कुछ हो गया। दिन कब आ रहे हैं बताओ जननी, राम कहिया ले, राम के वियोगवा भगवान लागे, ओके लागे, प्लीज़ जो भी ऑन है कमेंट करिए आप सब। अचरी नगरिया कब आके बसे जननी।
ऑन है जो भी प्लीज़ कमेंट करिए आप सब। ऑन 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 जो भी है प्लीज़ कमेंट कमेंट कमेंट। आवाज दो हमको हम बहनी हम ऑन हई बस हमारा नेटवर्क वा ना साथ दे पा बहनी। कोनो बात नहीं दीदी बिल्कुल भी। तो आप ऑन रहिए कोई दिक्कत नहीं है दीदी। ठीक है आपका कमेंट नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बस आप ऑन रहिए। दीदी प्लीज़ जाते टाइम बता के जाइएगा आप प्लीज़। अगर फिर कोई नहीं रहेगा दीदी जी तो हम म्यूट कर देंगे ना एलबी। तो आप प्लीज़ जाते टाइम बता दीजिएगा। अभी भी हम म्यूट कर दे रहे हैं दीदी कोई मैसेज नहीं कर रहा है। तो जो भी मैसेज करेगा फिर हम जवाब देंगे। ओके दीदी।
राम राम भैया जी, राम राम। कैसे हो भाई? ठीक। एक मिनट भैया जी, बस ये। हेलो भैया जी, राम राम। मैं ठीक हूँ भैया जी, लाइक डन करने के लिए थैंक यू भैया। आप बताओ, आप कैसे हो भैया? मैं एकदम ठीक हूँ भैया। खाना हो गया भैया जी आपका? थैंक यू भैया, आप मेरे लाइफ में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गंगाधर भैया जी, आपका खाना पीना हो गया? अच्छे हैं जी, अच्छा अच्छा भैया जी। अच्छे से सो जाओ, ठीक है। खाना हो गया जी, अच्छा भैया जी, अच्छा अच्छा। मेरा भी खाना हो गया भैया। और बताइए, आप कैसे हैं? घर में सब ठीक है भैया जी? बस। क्या बोल? आज ड्यूटी पर, हाँ अभी। अच्छा भैया, आज अभी ड्यूटी पे हैं। ओके, बाय बाय। बाय बाय भैया जी, थैंक यू। थैंक यू भैया। ओके, बाय 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 भैया जी। प्लीज़ जो भी ऑन है कमेंट करिए।
श्वेता दीदी ऑन रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दीदी। थैंक यू शरिता दीदी।
राधे राधे निशा दीदी। कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ निशा दीदी, आप बताइए कैसी हैं? प्लीज़ लाइक कर दीजिए निशा दीदी। आप कैसी हैं निशा दीदी? निशा दीदी मैं भी आपसे जुड़ गई हूँ, प्लीज़ देख लीजिए आप। देखिए आपका चैनल मैंने आपसे जुड़ गई हूँ मैं, आप दीदी देख लीजिए। मैं भी आपसे जुड़ गई हूँ दीदी। ठीक है दीदी, मैं भी आपसे जुड़ गई हूँ। जुड़ गए हैं बहन, देखिए आप, आपका चैनल देखिए, मेरे स्क्रीन पे देखिए, आप देख लीजिए, आपसे जुड़े हैं हम। जुड़ गए हैं बहन हम भी आपसे। ठीक है बहन, कमेंट भी किए होंगे, अगर हम आपको ज्वाइन किए तो दीदी आपको कमेंट भी किया होगा मैंने, आप चेक करिएगा दीदी, कमेंट ज़रूर हम किए होंगे।
ओके दीदी रुकिए, हम आपको चेक करके बताते हैं किस वीडियो पे किया है मैंने आपको ज्वाइन। वीडियो लॉन्ग वीडियो पे ही किया होगा दीदी। अभी तो मैं देख भी नहीं सकती हूँ, कैसे बताऊँ आपको चेक करके। मैंने देखी दीदी, आपको मेरे स्क्रीन दिख रहा है दीदी, फ़ोन की स्क्रीन में देखिए, लाइव जहाँ कर रहे हैं दीदी, ऊपर देखिए, आपके चैनल पे देखिए, सब्सक्राइब लिखा है, मैंने कर दिया है। और प्लीज़ आप चेक करके देख लीजिए। मैंने आपको कमेंट किया है दीदी, लेकिन अभी लाइव के बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने किस वीडियो पे कमेंट किया है, क्योंकि अभी लाइव में तो देख नहीं सकती। आप स्क्रीन पे देखिए मेरे दीदी, अभी दिखेगा आपको, दिखेगा ज़रूर, ध्यान दीजिएगा, ऊपर स्क्रीन पे ध्यान देते रहिए आप। देखिए दीदी, आपको दिखेगा कि मैंने आपको ज्वाइन किया है, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। हाँ दीदी, देखिए देखिए दीदी, कोई बात नहीं दीदी, आप देख लीजिए। और ये आपको मैंने तुरंत रिटर्न किया है दीदी, देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप, स्क्रीन पे देखिए आप मेरे, आपका आ रहा है चैनल, आपका चेक किए हैं, देख लो, ज्वाइन कर लिए हैं दीदी, आपको देख रही हैं आप। राधे राधे सरिता दीदी, राधे राधे, ऑन रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दीदी। जाइए दीदी, अब आप सो जाइए सरिता दीदी, आप बहुत देर से ऑन हैं दीदी। थैंक यू इतनी देर तक ऑन रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सरिता दीदी। अब जाइए, आप सो जाइए। देख लीजिए दीदी आप, निशा दीदी आप स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। मैं आपसे जुड़ गई हूँ बहन। राम 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 दीदी, राम राम।